Hi, I am Sayyid Rashid. So, hope our lab visit was very good to you, and you might have seen many things in the lab as well as you have seen the activities done practically by me, as well as you understand better while you was visualize with practical things. उम्मीद करता हूँ जो लैब की विज़िट थी हमारी बहुत अच्छी रही होगी, आपको कुछ चीज़ें देखने को मिले और कुछ रिएक्शंस मैंने बताने की पूरी कोशिश की, आपको अच्छे से अच्छा लगा होगा। और ये प्रैक्टिकल्स का प्रॉफिट बेनिफिट ये होगा स्टूडेंट्स के आपको अच्छे से अच्छा समझ में आएगा। चलिए, जो चीज़ हम प्रैक्टिकल में वैसे तो मैं 2 या 3 चीज़ें बताया था आपको, नाउ अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन डीपली हम स्टडी करेंगे। सो वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन विथ अस। So what is the concept of reaction? Reaction is nothing but what happen if like acid mix with base, or what's happen if acid mix with metal, what happen if acid mix with metal carbonate, what happen if acid mix with metal hydrogen carbonate, and what happen if acid mix with like metal oxide. These reactions. Apart from this, what happen if base mix with acid, what happen if base with metal, what happen if base mix with metal oxides. Like that experiments we are going to do. So this experiment I will tell you once, after that you will get few question and answers on your screen, you need to remember that. Okay, so starting with the reaction name as neutralization reaction, as you can see on the board. After that we have reaction of acid and base with metal, we have reaction of acid with metal carbonate, metal hydrogen carbonate, then we have reaction of acid with metal oxide, reaction of base with metal oxide. This many things we have on the board, but we need to go one by one. Okay, so first neutralization reaction. Student, first you need to give the definition of neutralization reaction. What is neutralization reaction? Okay, I will display this question answer on your screen, but as of now I am telling you like verbally. Okay, the question will be like that: what is neutralization reaction? Give 2 examples. Okay, so first I will tell the neutralization reaction. Neutralization reaction, if acid react with base, it gives corresponding salt and water, is called neutralization reaction. तो देखिए स्टूडेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? अगर एसिड मिलेगा किससे, बेस से मिल जाएगा तो उन्हें करस्पॉन्डिंग सॉल्ट देगा, जो भी सॉल्ट उसका बनता है वो सॉल्ट, और आपको वाटर पानी मिलेगा, तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए, एसिड प्लस बेस गिव राइज टू साल्ट प्लस वाटर। ओके, तो अब यहाँ पे 2HCl यानी कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl प्लस NaOH गिव राइज टू NaCl and H2O. This is our neutralization reaction with example. Okay, definition you can write by the help of equation itself. If acid react with base, it gives corresponding salt and water. It's called neutralization reaction. Example is 2HCl plus NaOH give rise to NaCl plus H2O. But student, I want to remind you one thing. I have show you this neutralization reaction in lab, if you remember. But in lab I was the materials like HCl, as you can see HCl, plus I was taken as KOH, that is potassium hydroxide. Here HCl is acid, potassium hydroxide is base. So what it will give like KCl2 plus H2O. It will give like this. Now I am balancing this equation. 2HCl, that is 2 molecules of HCl, plus KOH, that is potassium hydroxide, give rise to KCl2 plus H2O. So KCl2 is nothing but it is the salt name as potassium chloride. So this was done practically in the lab, if you remember. Okay, so this is a practical we have done yet. Now coming to the answer. For answer, how to write? So for answer, first you need to write like aim to show neutralization reaction. So just you wrote the like to show neutralization reaction. Material required. What is the material required? Dilute HCl, dilute NaOH, test tube. 3 materials you are requiring like dilute HCl, dilute NaOH and test tube, or else you can require like dilute HCl, dilute KOH, test tube. 3 things you need to require in materials. Procedure:
take about 2 ml of dilute NaOH. Either you can take NaOH or KOH, it's your wish. In practically I show like NaOH, but now we are doing as per reader. So for this point you need to remember like NaOH. So we have taken like 2 ml of dilute NaOH in clean and dry test tube. You need to be clean the test tube and wipe it with the help of cloth, or else you need to leave the test tube few minutes in air so that the test tube will be totally dry. So first step done, take about 2 ml of dilute NaOH in clean and dry test tube. Now second, add dilute HCl drop by drop. You need to add the dilute HCl on your gas, drop by drop. Observe, we observe NaCl crystals and water above it. That means if you are just seeing, if you are shaking the test tube, you will observe very tiny NaCl crystals and water above it. Result, neutralization reaction done. After that you need to write like chemical equation, acid plus base give rise to salt and water. So this is your आंसर. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस आंसर इन आवर ओन लैंग्वेज हिंदी. देखिए बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में अगर आपको पूछा तो सिंपल है, पहले आप उसका डेफिनेशन लिख दीजिए. डेफिनेशन लिखने के बाद एम लिखेंगे आप टू शो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. मटेरियल रिक्वायर्ड में आपको 3 चीज़ें रहेंगे, एक डाइल्यूट HCl रहेगा, एक डाइल्यूट NaOH रहेगा, साथ ही साथ टेस्ट ट्यूब. 3 थिंग्स. प्रोसीजर में आप क्या करना है, थोड़ा सा NaOH जो डाइल्यूट है 2 ml ले लीजिए टेस्ट ट्यूब में. उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है HCl को ऐड कीजिए. मगर जब आप टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं तो ख्याल रहे कि टेस्ट ट्यूब क्लीन होनी चाहिए और ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी और सूखी होनी चाहिए. जैसा ही आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डाइल्यूट HCl डालेंगे उसके अंदर, आपको ऑब्जर्व करेंगे बहुत टाइनी क्रिस्टल्स रहेंगे NaOH के और वाटर रहेगा उसके अबव. तो रिजल्ट में हम लिखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डन. सो केमिकल इक्वेशन भी आपने लिख लिया, एसिड प्लस बेस गिव राइज टू साल्ट प्लस वाटर. ये आपको रीडर में एक्टिविटी नंबर 5 बोल के रहेगा. आप चाहे तो रीडर भी एक मरतबा चेक कर सकते हो. नाउ होप यू अंडरस्टूड विद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नाउ लुक एट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आंसर in and diagram on your screen. Okay, if you want you need to just pause for few minutes and copy down this answer with the help of diagram. Okay, now the time to see the answer on your screen. Okay, hope student you have saw the answer and hope you copied also. So next we will going to learn like reaction of acid and base with metal. So what happen if acid and base mix with metal? It is not a meaning that acid and base together mixing with metal. Just we are doing separate experiment like acid plus metal, base plus metal. But the heading is in your reader like reaction of acid and base with metal. So that I wrote the heading like this also. तो हम नेक्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस मेटल से रिएक्ट होने पे क्या होता. तो हम एसिड और बेस को सेपरेट करेंगे, एक्सपेरिमेंट मिलाकर नहीं करेंगे. ठीक है, जैसा आपके रीडर में हेडिंग दिया था मैंने वैसे ही बोर्ड पे लिखा था. तो देखिए सब में पहले एसिड प्लस मेटल गिव राइज टू साल्ट प्लस वाटर. सो सेम डेफिनेशन, व्हाट हैपन इफ एसिड रिएक्ट विथ मेटल. तो आप क्या करना है डेफिनेशन में, पहले साइड हेडिंग डाल दीजिए रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल डाल के, इफ एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट गिव्स साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. साल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस, ये 2 चीज़ें आपको मिलेंगी. ये डेफिनेशन हो गया. नाउ एम की बात करें, पहले क्या लिखना है, टू शो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बोल के लिख सकते हैं. यहाँ पे इस आंसर में आपको डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. नाउ मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल्स रहेंगे आपको, मेटल जिंक ग्रैन्यूल्स यानी कि जिंक के छोटे छोटे मेटल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिलीवरी ट्यूब, ग्लास थ्रोन, कैंडल, सोप वाटर. This many things required to do this experiment. Now one more thing I'd like to remind you, we have done this experiment in our lab also. लैब में भी करे थे, याद है? Do you remember what we have done in lab? लैब में हमने क्या किया था, लाइक यहाँ पे तो आपका अलग है, मैं उसका इक्वेशन लिख रहा हूँ. लैब में हमने क्या किया था, HCl plus Fe हमने आयरन के टुकड़ों के साथ किया था, याद है?
इट्स गिव राइज टू FeCl2 प्लस H2। यहाँ पे थोड़ा बैलेंस कर लेता हूँ मैं इक्वेशन को, दिस इज 2HCl, 2HCl plus Fe give rise to FeCl2 plus H2. This we have done in our lab practically, you know, you already saw. You need to remember things. You are not supposed to forget. You have to remember the things, okay? So this we have done in lab, but in now I am taking another material. The name of the metal is nothing but zinc, okay? Here I am taking the metal like zinc, okay? So first you have write the aim as well as material required. Now I am placing diagram on your screen. So first look at the diagram. I will explain you the diagram. Now this thing you will get the diagram on screen and I am explaining you. I will not going to be on screen during this diagram, okay? So look at the diagram. As you can see the diagram, we have like stand. After stand we have delivery tube, okay? After delivery tube we have one boiling tube with us, that is test tube, and after that we have one beaker, you can see, and we have candle, and just we are burning that candle and it gives the pop sound. This type of diagram it is shown in your screen as you can see. So this diagram is you can understood by the help of labeling only, need not to explain this diagram in more detail. We have kept the water normal water only, that is soap water, okay? Now look at me. Procedure: set the apparatus as shown in the diagram. You need to set the apparatus as shown in diagram. Now take about 10 ml dilute HCl in test tube. You need to take the 10 ml dilute HCl in test tube. Add few zinc granules in it. You need to add few zinc granule in it. Observation: we observe the gas evolve. We observe the gas evolve. The gas which is evolving we are observing. Now burn this gas, it gives pop sound. You need to burn that gas, it will give pop sound indicating hydrogen gas. So hydrogen is only the gas with burn with the sound pop, okay? Chemical equation: I wrote chemical equation like acid plus metal give rise to salt plus water. 2HCl plus Zn give rise to ZnCl2 plus H2. Now this activity is very simple. Just you need to first copy down the thing which I am displaying on screen. After that you need to read. After reading you need to understand, memorizing and revise our 5 principle, okay? So I will explain this activity in our own language हिंदी. चलिए थोड़ा सा मैं हिंदी में बोल देता हूँ. एक्टिविटी सिंपल है स्टूडेंट. हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसका नाम है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, ठीक है? तो व्हाट है, तो इसके लिए हम आपको एम लिखना पड़ेगा. जो एम है वही लिखेंगे आप. टू शो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. फिर उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड आपको जो भी है, मेटल जिंक ग्रैन्यूल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिलीवरी ट्यूब है, ग्लास थ्रोन, कैंडल और सोप वाटर है. उसके बाद मैंने एक डायग्राम डिस्प्ले किया था आपके स्क्रीन पे. आप चाहे तो थोड़ा सा रिवाइंड करके वो डायग्राम चेक कर सकते. तो डायग्राम आपको उतारना है. वो डायग्राम के बाद मैंने प्रोसीजर क्या करा, जो डायग्राम में हमने सेट किया था अपैरेटर को आप उस तरीके से सेट कर लीजिए. फिर आप क्या कीजिए, टेक अबाउट यानी 10 ml आप डाइल्यूट HCl ले लीजिए टेस्ट ट्यूब में. उसके अंदर थोड़े से जिंक के ग्रैन्यूल डाल लीजिए. ये हमारा प्रोसीजर के 2 पॉइंट थे. ऑब्जर्वेशन में हमने लिखा था वी ऑब्जर्व द गैस इवॉल्व हुई. ना उस गैस को बंद कीजिए यानी कि जलाइए, तो आपको पॉप नाम का साउंड से जलती है वो गैस. उसके बाद मैंने केमिकल इक्वेशन लिखा. उसके बाद हमारा आंसर कंप्लीट हो गया. तो ये है आपका रिएक्शन ऑफ एसिड with metal with the help of diagram. Now I will going to place this answer on your screen with diagram. You need to copy down this answer as well as diagram, okay? Now look at the screen. Hope you have copied down this answer. Now we are moving with next answer, like reaction of base with metal. That is what happen if base react with metal. Now here the definition and procedure really same, but we have few differences in this. हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन भी सेम है और आंसर भी सेम है. थोड़ा सा आपको डिफरेंस रखना है. क्या रखना है, यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे थे एसिड की बदल बेस का इस्तेमाल करना है. तो हम आपको डेफिनेशन कैसा लिखना पड़ेगा, इफ़
base react with metal if gives salt plus corresponding gas, that is hydrogen gas, corresponding salt and hydrogen gas. तो अगर बेस अगर मेटल हुआ, मेटल से रिएक्ट हुआ तो साल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। ये डेफिनेशन आपने लिख लिया। एम लिखेंगे टू शो रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और मटेरियल रिक्वायर्ड में आप मेटल जिंक ग्रैन्यूल तो सेम रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बदल आपको क्या लिखना है? यस, यू आर करेक्ट, यू नीड टू यूज एनी बेस। तो बेस आपको लिखना क्या है यहाँ पे? लाइक आप यहाँ पे बेस लिख सकते NaOH। ओके, यहाँ पे जो हमारा बेस है NaOH है, तो बेस लिख लीजिए। साथ ही साथ यू नीड टू राइट लाइक डिलीवरी ट्यूब एज इट इज, ग्लास थॉर्न एज इट इज, कैंडल एंड सोप वाटर, दिस मेनी थिंग यू हैव टू डू। नाउ डायग्राम। डायग्राम आपके स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल का। पहले डायग्राम एक 5-10 सेकंड तक देख लीजिए आप, उसके बाद आगे हम बात करेंगे।